children, how are you? I hope you all are doing well and you have started taking interest in learning English. Right. So children, continue doing so because we want you to be pro in English. So बच्चों, ये अलग-अलग chapters जो हम पढ़ते हैं in English, I hope you are getting to learn a good lesson from them. They're teaching you something nice. Okay, they are giving you information about different things. Great. So बच्चों, in this chapter, we are going to talk about something which is very mysterious. Okay, nobody has actually found an answer to this question. देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ के whether the questions, the mystery has been solved or not. So this chapter's name is Mysterious Triangle. So बच्चों, let's read the prologue to understand what is this mysterious triangle. Okay, the Bermuda Triangle is an area of the Atlantic Ocean where ships and airplanes are said to disappear mysteriously. Bermuda, Florida, and Puerto Rico are often identified as the points of the triangle. People began telling stories about the Bermuda Triangle in the 1800s. They said that ships and later airplanes in the area often vanished without a trace. They blamed the disappearances on mysterious or supernatural forces. Some of the stories were based on facts. Ships did sink and planes did crash in the area. Sometimes their wreckage was never found. So बच्चों, this chapter is talking about Bermuda Triangle, okay? जो एक एरिया है अटलांटिक ओशियन में जहाँ पे कहा जाता है कि शिप्स और एरोप्लेन्स जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं. So अभी ये बर्मुडा ट्रायंगल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ बर्मुडा, फ्लोरिडा एंड पोर्टो रिको. ओके, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं इस ट्रायंगल के और कहा जाता है कि मिस्टीरियसली यहाँ से जो शिप्स है या जो एरोप्लेन्स है वो सिंक हो जाती है, एरोप्लेन्स डिसअपियर हो जाते हैं. 1800s में पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस, ओके, दैट थिंग्स आर डिसअपियरिंग. तो उन्हें लगा कि कुछ तो मिस्टीरियस है, कोई तो सुपर नेचुरल फोर्स है जिसकी वजह से ये हो रहा है इस पोर्शन में. ओके, सो चिल्ड्रन, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस इवन यू विल हियर डिफरेंट स्टोरीज अबाउट इट. So let's read about this in detail in this chapter, okay? Before that, let's do a warm-up. Have you ever heard about the Bermuda Triangle before? Collect some interesting details about it and share with the class. So बच्चों, जल्दी रिसर्च करो, information find out करो और अपने classmates के साथ discuss करो. Okay. Teacher tip. The teacher should begin with a brief description about the myths related to the Bermuda Triangle. Students should be encouraged to believe in logic and proven facts. They must discard superstitious beliefs. So बच्चों, कभी-कभी क्या होता है, हमें एक्चुअल रियलिटी पता नहीं होती है. ओके, और जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, मिस्टीरियस चीज़ें हो जाती हैं, सो व्हाट हैपन्स इज वी ऑलवेज ब्लेम इट ऑन द सुपर नेचुरल फोर्सेस. ओके, हमें लगता है कि ये कोई तो सुपरस्टिशियस चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ तो है. ओके, एंड वी नेवर लुक एट द फैक्ट्स. So let's try to look at facts before making up our own stories about something and believing in the stories that are just cooked up by people on superstitious grounds. Okay, now let's read the chapter. Okay, it's going to be very interesting. There is a spot in the Atlantic Ocean east of the United States where many strange incidents have been taking place for years now. Planes have disappeared from radar screens and ships have been found with no crew. Many small boats and aircrafts have gone missing. All these incidents have something in common. They are mysteries that have yet not been solved. So बच्चों, Atlantic Ocean east of United States में एक जगह है जहाँ पे planes जो है रडार में से, रडार स्क्रीन से डिसअपियर हुई है. शिप्स जो है वो ऐसे ही गायब हो गई है, उसके अंदर क्रू नहीं है, कोई नहीं है. स्मॉल बोट्स गायब हुए, एयरक्राफ्ट्स हैव गॉन मिसिंग. ओके, ये सारी चीज़ें हुई है जो बहुत उस एरिया के लिए काफ़ी कॉमन है, बट ये मिस्ट्री क्या है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई. दिस एरिया ऑफ डेंजर began to be known by names like the Devil's Triangle and Hoodoo Sea until Vincent Gaddis, a journalist, coined the term to the Bermuda Triangle in 1964. So इस एरिया के अलग अलग नाम दिए गए फिर,
डेविल्स ट्रायंगल, हुडू सी, ओके। फिर जो विंसेंट गैडिस करके जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम दिया बर्मुडा ट्रायंगल इन द ईयर 1964। लेटर चार्ल्स बर्लिट्ज, सॉरी, सो बच्चों इस एरिया को अलग अलग नाम दिए गए, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, हुडू सी, ओके। फिर विंसेंट गैडिस जो थे, एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दिया बर्मुडा ट्रायंगल इन द ईयर 1964, ओके। लेटर चार्ल्स बर्लिट्ज used the name in his book, also called the Bermuda. Later, Charles Berlitz used the name in his book, also called the Bermuda Triangle. The book was a bestseller. Okay? तो बाद में चार्ल्स बर्लिट्स जो थे, उन्होंने अपने बुक को भी यही नाम दिया, द बर्मुडा ट्रायंगल, और ये बुक जो थी वो बेस्ट सेलर थी। On a map, the Bermuda Triangle can be marked out as a rough triangle stretching from Miami to Puerto Rico, then to Bermuda and back to Miami. But the power of this mysterious stretch of ocean is felt beyond its boundaries. Okay? Many aircraft and ships have vanished without a trace in the Bermuda Triangle area, and only a few people have survived to share their terrifying experiences. So, बच्चों ये जो Bermuda Triangle है, ये मायामी से शुरू होता है, फिर पोर्टो रिको जाता है और बैक टू मायामी, ओके। बट द पावर, ओके, इसका जो मिस्टीरियस स्ट्रेच का जो पावर है, इट इज़ बियॉन्ड बाउंड्रीज, ओके। बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स, बहुत सारी शिप्स वैनिश हो गए, बहुत कम लोग बचे हैं जस्ट टू टेल देयर सर्वाइवल स्टोरीज, ओके, द मिस्टीरियस स्टोरीज ऑफ देयर सर्वाइवल. Others have left recordings in their radio communication before disappearing in the same way. These recordings tell us about the compasses that went out of control, the strange fog which covered the sea and the sky, and the unidentified flying objects, UFOs, that were sighted. So, यहाँ पे लोगों के एयरक्राफ्ट शिप्स सब वैनिश हुए, लोग वैनिश हुए. कोई लोगों ने जो बचे नहीं थे, उनके जो लास्ट कम्युनिकेशंस थे वो रिकॉर्ड हुए थे, तो उसमें उसके हिसाब से, ओके, द कंपासेस हैव गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, ओके. They have seen that a strange fog has covered the area, the sea area, the sky area. They have seen UFOs, unidentified flying objects in the air, okay. One of these occurred in 1980 when pilots Jose Torres and Jose Santos were flying back to, One of these occurred in 1980 when pilots Jose Torres and Jose Santos were flying back to Puerto Rico from the Dominican Republic. Their radio transmission sometime during the flight said that there was a UFO in their path. No one heard from them and saw them after the message. It seemed that the plane and its crew had simply vanished. There are also first-hand accounts from people like Captain Don Henry, which confirm such tragic happenings. Okay? तो एक ऐसा ही हादसा हुआ 1980 में, ओके, जब पायलट्स होजे टॉरस एंड होजे सैंटोस, ओके, डोमिनिकन रिपब्लिक से पोर्टो रिको वापस जा रहे थे, ओके. तो उनका रेडियो ट्रांसमिशन जो है उस पर उनको ऐसे लगा कि कोई यूएफओ है वहाँ पे उनके पाथ में, ओके. फिर उसके बाद किसी ने भी उनके बारे में ना सुना, ना मैसेज मिला उन्हें, कुछ भी नहीं. इट जस्ट सिंपली वैनिश्ड, द प्लेन सिंपली वैनिश्ड, ओके. ऐसे ही हुआ है कैप्टन डॉन हेनरी के साथ भी, okay. Many mysteries of the Bermuda Triangle have remained unsolved. आज तक ये mysteries solve नहीं हुई है. One morning in January 1948, okay, a BSAA Tudor 4 airliner Star Tiger suddenly disappeared. It was less than 2 hours away from its destination, Bermuda. A report on this incident concluded the disappearance of Star Tiger must remain an unsolved mystery. Almost a year later, on 17 January 1949, another airliner, Star Ariel, bound for Jamaica, took off from Bermuda. It was never heard of again. A few days earlier, a DC-3 airliner had approached Miami International Airport with 31 passengers and crew on board. So बच्चों देखो, there was in 1948, January 1948, BSAA Tudor 4 एयरलाइनर स्टार टाइगर गायब हो गया, ओके, जो बर्मुडा की तरफ जा रहा था.
फिर उसके बाद 1949 में 17 जनवरी 1949 में स्टार एरियल जो जमैका जा रहा था वो गायब हो गया। उसके बाद उसके पहले DC-3 एयरलाइनर मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंच रहा था 31 पैसेंजर्स के साथ। So बच्चों, before we read this chapter further, we have to track how much you've understood about this story. And for that, what do you have to do? You have to solve the performance tracker. Okay, now let's move ahead. The pilot radioed in to say that it was only 80 kilometers away. That was the last that was ever heard or seen of the plane. The region in which it disappeared had shallow seas, but the wreckage was not found. There was nothing. It was as if there had been no plane and no crew. Such unexplained disappearances have been making people take notice of this mysterious section of the ocean. In 1952, the journalist George Sand wrote an article about the disappearance of Flight 19 and other odd incidents in the October issue of a magazine called Fate. He described the region as a watery triangle surrounded roughly by Florida, Bermuda and Puerto Rico. Disappearance of Flight 19 is one of the most famous unsolved mysteries of the Bermuda Triangle. So, जब वो प्लेन जो 31 पैसेंजर्स को लेके जा रहा था वो उसका लास्ट मैसेज जो था उस जो पायलट ने रेडियो पे बताया था was that we are just 80 kilometers away. But उसके बाद there was nothing about those airline. It never reached, it just disappeared. And although the sea which is there in that triangle is shallow, still there was no wreckage of that plane found. It just disappeared, there was nothing. There was no plane, there was no crew, there was nothing over there, वैसे ही 1952 में जर्नलिस्ट जॉर्ज सैंड ने एक आर्टिकल लिखा अबाउट फ्लाइट 19 जो ऐसे ही गायब हो गया. Then again on 3rd February 1963, the SS Marine Sulphur Queen mysteriously disappeared off the south coast of Florida. Neither the ship nor her 39 crew members were ever found. So, February 1963 में SS Marine Sulphur Queen, ऐसे ही mysteriously गायब हो गई. She was on the south coast of Florida. She just disappeared. No ship was found, none of the crews were found. Many search and rescue attempts have been made by coast guards in the Bermuda Triangle area, but none of them has revealed any trace of an accident. The environment of the mid-Atlantic area is hazardous in some accident-causing way. The ocean has fast-running currents which can carry wreckage far away from a crash site. Avengers are very heavy planes. If the 5 Avengers on Flight 19 had crashed, then there was very little chance of finding parts floating. But the aircraft themselves should have been found, but they were not. Not finding evidence is quite unusual for plane crashes or shipwrecks at sea, and that only deepens the mystery. So बच्चों, ये जो एरिया है उसमें कोस्ट गार्ड्स ने बहुत से लोगों ने रेस्क्यू अटैम्प्ट्स किए हैं, सर्च अटैम्प्ट्स किए हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिला कि ये कैसे गायब हो रहे हैं. तो जो एरिया है मिड अटलांटिक एरिया जो है वो काफ़ी हैजर्डस है, काफ़ी डेंजरस है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. ओशन का जो करंट होता है वो बहुत फास्ट रनिंग होता है. बट जो रैकेजेस होते हैं, अगर कोई चीज़ गिर रही है, एयरलाइन गिर रहा है या शिप गिर रहा है, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं. बट स्टिल नन ऑफ दीज रैकेजेस वर ऑल्सो फाउंड. जो अवेंजर्स होते हैं वो बहुत हैवी प्लेन्स होते हैं. तो 5 अवेंजर्स जो फ्लाइट 19 पे गए थे वो क्रैश हो गए, बट फिर भी उनके कोई भी पार्ट्स फ्लोट होते हुए उन्हें कहीं पे भी नहीं मिले. दे वर जस्ट नॉट फाउंड, नन ऑफ दीज थिंग्स वर फाउंड. सो इसकी वजह से जो मिस्ट्री है वो काफ़ी डीप होते जा रही है. नोबडी नोज व्हाट एंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. The US Coast Guard believes that harsh natural conditions, human mistakes and mechanical failure are the reasons for the disasters. This zone experiences sudden storms and tornadoes, also called waterspouts, which can kill. But a final answer
has not yet been found. तो यूएस कोस्ट गार्ड जो है उन्हें लगता है जो हार्श नेचुरल कंडीशंस है, जो वेदर कंडीशंस है, उसकी वजह से हो सकता है, या ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हो सकता है, या मैकेनिकल फेलियर की वजह से हो सकता है। क्योंकि उस एरिया में, उस जोन में काफ़ी स्टॉर्म्स आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं, उनको वाटर स्पाउट्स भी बोलते हैं, ओके, जो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, वो किसी भी इंसान को मार सकते हैं, या कोई भी चीज़ वो ये कर सकते हैं, दे कैन जस्ट किल एनीथिंग, ओके, और डिस्ट्रॉय एनीथिंग। But an answer is not yet been found. Until now, more than 100 planes and countless boats have gone missing in the Bermuda Triangle. Is this only a coincidence, or is it because the place is cursed by supernatural forces? Perhaps we will never know. So बच्चों, ये mystery जो है Bermuda Triangle की, it's an unsolved mystery. कभी भी इसका जवाब मिला नहीं है। बहुत से लोगों ने बहुत से अटेम्प्ट किए हैं टू फाइंड आउट द एक्चुअल रीजन why this continues to happen. So children, you also keep exploring. You never know, you might find an answer very soon. Alright children, so now reread this interesting chapter, practice the back exercises, don't forget to practice the difficult words, read the important words and their meanings as well.